Hello everyone, myself Prasanna Mahanti, lecturer, IIPM School of Engineering and Technology. Today we will be discussing a new topic that is engineering mechanics. So let me put the heading that engineering mechanics. So let me tell you the definition of engineering mechanics, that it is a branch of physical science which deals with the force and energies and the effect of these quantities on an object. So let me write this one. It is a branch of physical science and it deals with force and energies and its effects on an object and its effect on an object. So basically we are dealing with two quantities in mechanics, one is force, second one is energy. So let me we will be discussing about this force and energy in our subsequent session. So before proceeding further, let us classify the engineering mechanics. Now we will be looking after the division or the branches of engineering mechanics. So here I am putting the heading that branches of mechanics, or you can say engineering mechanics. Engineering mechanics can be classified into two types. Broadly, it can be classified into two types. So what are the two types? One branch is called static and second branch is called dynamics. Engineering mechanics can be classified into two types. One branch is static and second branch is dynamics. So what is happening in case of static? Here we are studying about the force when the object is at rest. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? We will be studying about the force, study of force when object is at rest. जब ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट में है तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? वी विल बी स्टडिंग इन स्टैटिक केस. एंड डायनामिक्स केस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सो व्हाट आर द टू टाइप्स? वन इज काइनेमेटिक्स and second one is kinetic. Mechanics can be classified into two types, static and dynamic. In static, we will be studying about the force when our object is at rest, and in dynamics, it again classified into two types, kinematic and kinetic. So let us discuss about what is kinematic. So I am putting the heading that kinematics. Kinematics. So what is kinematics? It is a branch of mechanics which deals with the object, the motion of the object without considering the force on it. So let me write this one. It is a branch of dynamics, or you can say it is the branch of mechanics which deals with motion of an object without considering the force, or you can say neglecting the effect of force, without considering the force. Let me explain this one. What do you mean by the without considering the effect of force?
without considering effect. Basically in kinematics we have to study about five fundamental concept. In kinematics we need to study about 5 fundamental concept without taking the effect of force. So what are those 5 fundamental fundamental concepts? The 5 fundamental concepts are: first one is your position. What is the position of the object, whether it is in a 2-dimensional manner or whether it is in a space that is in a 3-dimensional coordinates. First one is position. Second one is its velocity. Third one is its speed. Fourth one is its acceleration. And the fifth one is displacement. Basically in kinematics we have to study about these 5 fundamental concepts without considering the effect of force. So what are those? Position, velocity, speed, acceleration and displacement of an object. So this is the concept of kinematics. Let me proceed further and discuss about the kinetic. We know that kinetic is also branch of dynamics, where we have to study about the motion of an object, but with considering the effect of force. The only difference between kinematics and kinetic is, in kinematic we do not have to consider the effect of force, but in case of kinetic we have to consider the effect of force. So what is kinetic? Kinetic means it is the study of motion of an object. It is the study of motion of an object with considering the effect of force. With considering the effect of फोर्स. काइनेमेटिक्स में क्या होता था, हम लोगों को फोर्स कंसिडरेशन करना नहीं पड़ता था, बट इन केस ऑफ काइनेटिक वी हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. लेट मी गिव एन एग्जांपल. Suppose we need to accelerate a body. So what we have to do? We need to apply force. So we have to study the effect of force on the acceleration of that body. That comes under the case of kinetic. तो kinetic में हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना पड़ता है विथ कंसिडरिंग, मतलब उसमें कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो सब हमको स्टडी करना पड़ता है इन केस ऑफ काइनेटिक. सो दीज आर द 2 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, वन इज काइनेटिक एंड वन अदर इज काइनेमेटिक्स. And in case of a static we have to consider that our body is at rest and we need to study the force on it. So let me proceed further and we will be studying about the units. So what is unit? Let me put the heading, that is unit. Unit is nothing but it is the measures of quantities. कोई क्वांटिटी को हम लोग किससे मेजर करेंगे उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं. इट इज नथिंग बट द मेजर्स ऑफ क्वांटिटीज. यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द मेजर्स ऑफ क्वांटिटीज. इट इज द मेजर्स ऑफ क्वांटिटीज. अगर मैं यूनिट को क्लासीफाई करूं, यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. अ यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. First one is the fundamental quantity, fundamental unit. And the second one is derived unit. So unit can be classified. Unit, what is unit? Unit is a measure of quantities. क्वांटिटी को जिससे हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं. And unit can be classified into 2 types. One is fundamental unit, second one is derived unit. So what is fundamental unit? Total there are 7 fundamental units. In physics we need to study about total 7 fundamental quantities. So what are those 7 fundamental quantities? First one is mass, second one is length,
third one is time, fourth one is amount of substance, fifth one is luminous intensity, sixth one is temperature, and the last one is electric current. So total there are 7 fundamental quantities: mass, length, time, amount of substance, luminous intensity, temperature and electric current. But for the study of mechanics, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैकेनिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वी ओनली नीड 3 fundamental quantities. So what are those 3 fundamental quantities? Mass, length and time. We need only 3 fundamental quantities for solving the engineering mechanics problems. So this is the concept of fundamental unit. And what is derived unit? All other unit, or you can say all other quantities which can be derived from the fundamental unit is called derived unit. So you can say all other units derived from fundamental unit is called derived unit. So what are the example of this derived unit? अगर मैं derived unit का example की बात करूँ, बहुत सारे example हो सकता है. जैसे कि मैं मान लो example में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि area हो गया, volume हो गया, density of a substance हो गया, acceleration हो गया, all are comes under the example of derived unit. So these are the 2 units, one is fundamental unit and other is derived unit. अभी हम लोग बात करेंगे about the system of unit. अगर हम लोग system of units की बात करें, total there are 4 system of unit. Total there are 4 system of unit. हम लोग बात करेंगे systems of unit. अगर हम लोग system of units की बात करें, total there are 4 system of unit. So what are the 4 system of unit? First one is MKS system. I will tell you what is MKS system. Second one is CGS system. CGS system of unit. Third one is FPS system of unit. These are the 3 fundamental system of unit, and the fourth one or the last one is SI system of unit. SI system of unit. So what is this? अभी मैंने बोला था for solving the engineering mechanics problem we need only 3 fundamental quantities. One is mass, second one is length and third one is time. But total there are 7 fundamental quantities. What for solving the engineering mechanics problem we need these 3. In MKS format, M stands for it is the unit of length, that is meter. K stands for kilogram, that is the unit of mass, and S stands for second, that is the unit of time. In case of CGS format, C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. And for in case of FPS system, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. In order to or you can say for international use of purpose, we have to use another system of unit, that is called SI unit. SI stands for, it is nothing but international system of unit. हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस SI यूनिट को हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड और यू कैन से ऑल ओवर द ग्लोब हम लोग SI यूनिट को फॉलो करते हैं.
SI यूनिट में होता क्या है, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेम, इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो सेम होते हैं, बट डिफरेंट इज जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम लोग SI सिस्टम की बात करें, अगर मैं फोर्स का यूनिट लिखना चाहूं, फोर्स का यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं MKS फॉर्मेट में, वो क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये किस फॉर्मेट में लिखा गया, MKS फॉर्मेट में। अगर मैं इंटरनेशनली फोर्स का यूनिट लिखना चाहूं तो वो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेम, ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। द कॉन्सेप्ट इज द डिफरेंस बिटवीन mass and weight. Do you think the mass and weight both are equal? No, they are different. So what is the difference between them? Let us discuss about mass first. अगर हम लोग mass की बात करें, it is the amount of substance present in a matter or amount of substance present in an object. अगर मैं mass को define करना चाहूं, it is the amount of matter present in an object, present in an object. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, this is not a round, let us say this is our earth and this is our moon. Let us say this is our earth and this is our moon. There is a mass present over the surface of earth, let the value of mass is m, let the value of mass is m. Same mass is present at the surface of moon is m. So we can say the matter contained inside the mass which is present on the surface of earth must be equal to the matter, the object present on the surface of moon. यहाँ पे जितना मैटर होगा इस मास के अंदर, इस मास के अंदर भी उतना ही मैटर होता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। ये मास क्या होता है, इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, मास इज ऑलवेज remain constant irrespective of its position. Of its क्यों? क्योंकि मान लो ये और मास को हम लोग मेजर करते हैं विथ अ यूनिट kg, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेट अस से यहाँ पे जो मास है वो 10 kg है, 10 kg है। अगर ये मास मून पे रहता है तो भी उसका वैल्यू कितना बनेगा, 10 kg। देयर इज नो वेरिएशन इन मास। सो मास क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। अभी आखिर लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज वेट। वेट क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मास। ये क्या होता है वेट? वेट, weight is nothing but it is the measures of gravitational pull towards the surface of earth, surface of an earth, or you can say surface of an object. It is the measures of gravitational pull. It is the measures of gravitational pull. इसको समझने की कोशिश करते हैं सेम एग्जांपल से। Let us say this is our earth and this is our moon. Let us say the gravity is at surface of earth is 2x unit. यहाँ पे लिख देता हूँ, gravity is
2x unit, and the gravity at the surface of moon is, let us say, x unit. Suppose there is a mass on the surface of earth whose value is, let us say, 10 kg ले लेते हैं, and there is same mass present at the surface of moon which is also 10 kg, but you can say the gravity is 2 times stronger on the surface of earth as compared to the surface of moon. So we can say the weight of an object on the surface of earth is 2 times more than the weight of the same object on the surface of moon. So हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सिंपल वर्ड में अगर बोलना चाहें, the weight is different irrespective of its position और irrespective of its surface. मास जो था वो कांस्टेंट था, चाहे कहीं पे भी हो वो कांस्टेंट था, बट वेट जो है वो डिफरेंट होता है. वेट को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें, हम लोग को पता होगा द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मास फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है दैट इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है विथ स्मॉल लेटर g. सो वी कैन राइट F इक्वल टू m इंटू g. दिस फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो हम लोग ये लिख सकते हैं W इक्वल टू m इंटू g. तो जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटी, इसीलिए वो डिफरेंट होता है सरफेस के हिसाब से. चाहे अगर वो अर्थ पे हो उसका वैल्यू अलग होगा, मून पे हो उसका वैल्यू अलग होगा, लेकिन जो मास होगा दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग.